की वो यार पीछे वाला करो। फाइन तेरी वाइब्रेट करता बेटा, फाइन की आवाज बहुत आती है। चला लो, आप मत चलाओ। पहिए पकड़ा बेटा, देखो इनको आपको। yesterday I think you are aware a bill introduced in the parliament, Lok Sabha, replacing IPC, CrPC and Evidence Act. But if you look at the contents, that is old wine, new bottle. भारतीय न्याय यही है ना बेटा। What is there in the name? What matters, that is the substance. An IPC amendment bill in 1972 was introduced in the parliament. The observation of the law was that so far as drafting is concerned, Indian Penal Code is not the best drafted code in India, but maybe in the whole of the world. You find Nigerian Penal Code, other Namibian Penal Code, Malaysian Penal Code. Malaysian Penal Code वही है जो IPC है. Code means containing all the laws relating to a particular subject. तो CRPC का नया नाम रख दिया है नागरिक भारतीय. तो बेटा इंडिया दैट इज भारत, ठीक है ना. तो इंडिया में क्या, व्हाट इज द फॉल्ट इन इंडिया? भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल. थोड़ा नीचे जाओगे आप वही देखोगे. आओ तो ये बना तो नहीं ना कानून, हम तो पढ़ेंगे CRPC जो है. बट साइड बाय साइड we should also refer to the provisions which are, because this CRPC contains 484 sections. The proposed counterpart of CRPC contains, that contains 530 sections. वह डिफरेंस ये है ना, 530 सेक्शंस. तो ये डिफरेंस है. पहला है एप्लीकेशन, दूसरा है डेफिनेशन, तीसरा है रेफरेंस, थोड़ा फोर्थ या फिफ्थ है अरेस्ट जो हम पढ़ते हैं. पावर्स ऑफ द कोर्ट वो दिया. तो सम चेंजेस आर मेड हियर एंड देयर नॉट. बट व्हेन लॉ मिनिस्टर होम मिनिस्टर रेफर टू, ये ओल्ड लॉज हैं, कॉलोनियल लॉज है, हम इनको बदलना चाहते हैं, हिंदी में बोले हो, वो कहते हैं CRPC जो है ना 1898 की है. इफ यू लुक टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ द होम मिनिस्टर, उनको ये भी नहीं मालूम कि CRPC तो 1973 की है. इज नॉट ऑफ द ब्रिटिश era. IPC is of the British time. Evidence is of the British time. But CRPC is in accordance with the Constitution. When we studied what was the need to replace the old code by the new code, one was to ensure fair trial to the accused according to accepted principle of natural justice. Natural justice, you have the right to get justice according to the principle of natural justice. Right? And this comes from Article 21. Because after मेनका गांधी का केस तो बड़ा आपने पढ़ा ना सभी ने. After मेनका गांधी, the American due process of law or
Article 21 submit in the due process of law. नेचुरल जस्टिस हो गया। तो दूसरा स्पीडी जस्टिस हो गया। राइट टू स्पीडी जस्टिस इज योर राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्पीडी जस्टिस वही है। तो ये बेटा जो हम पढ़ेंगे वो भी देखेंगे। और देयर इज नॉट मच डिफरेंस। वो बेटा है ना, वो कहते हैं कि अंग्रेजों का कानून है, अंग्रेजों का तो बहुत कुछ है। इफ यू आर टू चेंज देन व्हाई नॉट टू चेंज द लैंग्वेज। अंग्रेजी को मिटा दो, ठीक है ना बेटा। ऊपर तो भारतीय रख दिया जी, ये बीच में वही है। पढ़ लेना बेटा, आपने गल हो गए। देखो भारतीय, वो भारतीय बना लिया बेटा। देखो आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग। ये सिस्टम है ना, दिस इज नॉट द लॉट ऑफ वन डे, पूरे पीरियड ऑफ टाइम। जो रूलिंग पार्टी कोई भी हो, वो है कि जो नई आ जाती है वो कहती है मैं पावर बढ़ने के लिए क्या करूँ। उसको डेफिनेशन का भी निकाल दो, पहला चैप्टर ना, दूसरा उसको बोलो पहला और दूसरा निकालो। हाँ पहला दूसरा। थोड़ा आप ना, आपको मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ इसमें थोड़ी बहुत, ठीक है ना। चाहिए ना बड़ा, नया वाली को तो चाहिए। वो कहते हैं ओल्ड प्रपोज्ड आएगा वर्ड, जो क्वेश्चन आएगा ना, द प्रपोज्ड भारतीय सुरक्षा, भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल कंटेन, टेक्स्ट बढ़ गया ना बाई टाइम, तो 530 सेक्शंस। तो प्रेजेंट वाली क्या है 484। तो इसके चैप्टर कितने हैं 37 प्रेजेंट के। यार ये क्या ले आया, इसको बेटा बुलाएगा कोई। उसको को पूरा निकाल के दे। हेलो बात सुनो, ये चैप्टर देने ना, पूरा चैप्टर स्कीम तो निकाले। कौन सा बोला जिंदर को, उसको पूरा बुलाओ, उसको उसको बुलाओ बुलाओ। तो पहला है बेटा इसका टाइटल, तो ये लोग नहीं आएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। संहिता, संहिता बेटा क्या होता है? ऐसे हम संहिता नहीं बेटा, मैं तो आप नहीं मालूम। बेटा कोड ही होगा टू, अच्छा निकालो। तो 2023। तो बड़ा पहला तो है, दूसरा है डेफिनेशंस, तीसरा है कंस्ट्रक्शन और रेफरेंस। तो ये सेम है। शॉर्ट टाइटल देखोगे ना सीआरपीसी का, आपकी जो है उसका भी है टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, यही होगा। क्या बड़ा लिखा है इसमें पहले चैप्टर के ऊपर, प्रिलिमिनरी जिसमें लिखा हुआ है जी, क्या लिखा बेटा? आगे टाइटल लिखा है कुछ शार्ट, आप देखो प्रिलिमिनरी हो गया ना, ये शार्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट तो सेम है जी। अब देखो दूसरा है डेफिनेशंस, वही ठीक है। तीसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस, ये जो रेफरेंस में ना, तो आ गया ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस,
अंडर द भारतीय नेक एंड अदर लॉज। बेटा वही है 4 जो सेक्शन है तो 5 है सेविंग। हो गया। अब बेटा 6 है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। 6 वही है जी। 7 है टेरिटोरियल डिवीजन, ठीक है जी। तो 8 है कोर्ट ऑफ सेशन। इनके फर्क होगा। 9 होगी कोर्ट ऑफ सेशन, है ना। 9 होगी ना इधर, ऐसे फर्क पा दिया है, कोई फर्क नहीं है इसमें। आगे है कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। आप देखो बेटा कितना डिफेक्ट है इसमें, ठीक है ना। ये सीरियल वाइज होना चाहिए ना। कोर्ट ऑफ सेशन जो होती है ना वो है नहीं। पहले कोर्ट ऑफ सेशन है ना 8 से, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फिर आ गया चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। बेटा चीफ जुडिशियल में सीनियर है ना, से ऊपर होना चाहिए कि नीचे होना चाहिए। अब देखिए चलो क्या होगा। I was also one of the person who participated in that। ये कब बुला रहे थे ना व्यू लिए, तो ये आर नॉट एमेनेबल टू रीजन तो सुनते ही ना। वो तो उनकी और व्यू है कि हम भारतीय लगाना है, ऐसे करना है। तो when you are not guided by logic, reason, but by emotions, so then this will be the situation। आइए बताइए। तो आप बेटा कोर्ट ऑफ जब पढ़ते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन जज, कोर्ट ऑफ डिवीजन सेशन जज, कोर्ट ऑफ असिस्टेंट सेशन जज, कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास। तो बेटा एक होता वर्ड हाज पाँच। हाज पाँच का अपने हिंदी में क्या कहते हैं, खिचड़ी। ये मिक्स बेटा जो राइस पूरा है वो तो नहीं होता ना, वो टोटे होते हैं उसके पीस, तो वो मिल जाते हैं, पता नहीं चलता कहाँ है। तो ये हाज पाँच किया हुआ। बट वी कांट से एनीथिंग बेटा, ठीक है आपने तो पढ़ना है, जज बनना है। तो बेटा आगे आ गया स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स, लोकल जुरिसडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, subordination of judicial magistrate, executive magistrate, special executive magistrate, local jurisdiction of executive magistrate, subordination of executive magistrate, public prosecutors, assistant public prosecutor, directorate of prosecution। तो ये बेटा कर दिए सेक्शन 20। तो इसमें क्या कितने थे, 25, एक दो निकाल दिए, और वही चीज है। अब चैप्टर 3 है कोर्ट्स बाय व्हिच ऑफेंसेस आर टू बी ट्रायबल। वही है ना, ये है फ्रॉम सेक्शन 26, इधर है 21। सेंटेंसेस विच हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन में पास, सेंटेंसेस विच मजिस्ट्रेट में पास, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। पता है इसमें क्या निकाल दिया बेटा, आप देखो। पावर ऑफ कोर्ट्स, कोर्ट्स बाय व्हिच ऑफेंसेस आर ट्रायबल, ठीक है। कोर्ट्स बाय व्हिच ऑफेंसेस आर ट्रायबल, यही हो गया ना। जो 27 है ना, ये ठीक है, इसको निकालना ठीक है। ये है ऑफेंसेस ट्रायल बाय जुवेनाइल। अब बेटा ऑफेंस जुवेनाइल का ट्रायल नहीं होता है, दैट इज अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। CrPC procedure does not apply to that। आपको मालूम है ना, इफ juvenile commits offense not punishable 7 or up, उसकी FIR नहीं होती,
दैट इज जुवेनाइल ने मर्डर कर दिया ना. देयर आर 3 adult, 1 juvenile. They have committed murder. Juvenile trial will be separated. He will not be tried by the court of session. He will be tried by the juvenile justice board. He will not be taken to the police station. He will not go to police remand. वो तो सेपरेट है उसका. ये ठीक किया है इन्होंने. तो आगे आ गया sentences which high court and session judge may pass. Sentences ये नंबर 28 है. Sentences which magistrate may pass. ये 29. ठीक है ना. थोड़ा सेक्शन का थोड़ा सा चाहिए है. Sentences of imprisonment, default of payment of fine. ये है 30. Sentences in case of conviction of several offences. ये 25 है. उधर है 31 आपका. ठीक है. Mode of conferring powers. थोड़ा 32 है ना. ये हो गया mode of conferring powers. Powers of officers appointed. ये भी वही हो गया है ना. तो आगे आ गया withdrawal of powers. ये भी हो गया. Powers of judges and magistrate exercisable by their successor in office. ये भी हो गया. थोड़ा यहाँ 35 है. ये बंद हो गया ना. अब आ गया चैप्टर 4. Powers of superior officers of police and aid to the magistrate and the police. बोले ये वही है. आप यार वही है ना. हमारा जो नए आया ना 1-2 बच्चे. ये हम जो नया कल बिल पास हुआ है ना, पेश हुआ है. Yesterday, new CrPC known as भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2003 was introduced in the Lok Sabha. ये पास होता नहीं होता God knows. पर बेटा ये कुछ नहीं है. हम कहते हैं ना ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल. वो ऊपर का चेंज कर दिया, नीचे का देखो भारतीय ही है. एक्सेप्ट भारतीय जनहित वगैरह बेटा. और नीचे कुछ नहीं है. देखो तो अब आ गया बेटा 36 तो है ना. पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस यही है. ये है 30. पब्लिक वेंट टू असिस्ट मैजिस्ट्रेट एंड पुलिस. ये 36 है. ये 37. आगे 8 to persons other than पुलिस ऑफिसर एक्सिक्यूटिव ब्रांच. ये भी है. आगे है पावर टू गेट इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टन ऑफेंसेस. ये बेटा ये 2 हिस्सों में बांटा था. इनको एक कर दिया. ड्यूटी ऑफ ऑफिसर्स एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ ए विलेज टू मेक सर्टन रिपोर्ट. बेटा ये भी वो है. ये है 39 से 40. ठीक है ना. यही है ना. तो आगे है 35. When police may arrest without warrant. तो ये है 41. थोड़ा ये आ गया प्रोसीजर
ऑफ अरेस्ट एट ड्यूटी द ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। तो ये बेटा उन्होंने ना जो है ना केस कुछ तो आगे हैं, जोगिंदर कुमार, जी के बासु, अवनेश कुमार, नौ सुंदर कुमार एंट्रल, उनको कंपाइल कर दिए। ये तो अब आया पहले वाले भी अवनेश कुमार, अप टू अवनेश कुमार लिया, वो किया। बड़ा ये नॉन कॉग्निजेबल में अरेस्ट बाई ए प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर टू अरेस्ट बाई मजिस्ट्रेट, प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस। तो ये है अप टू 45, तो ये अप टू 43 2 और अरेस्ट मेड, सर्च, परस्यूट, नो नेसेसिटी अनस्टेन्ड। बेटा ये आप सेक्शन देखेंगे 46, 47, 48, 50, weapons offensive, examination of accused by medical patient at the request of the police officer, examination of arrested person by medical officer, identification of person arrested, procedure when police officer disputes 48। तो ये बड़ा है हेल्थ एंड सेफ्टी, बड़ा वही है तो पढ़ेंगे ना, है ना। तो बीनी देयर भाई बेटा इसमें कुछ नहीं है। बेटा ये सेक्शन है अरेस्ट to be made strictly according to the संहिता, बेटा अकॉर्डिंग टू द कोड। ये है सेक्शन 60A। अब 60A निकालो बेटा, वही है ना, ये वही है ना। अब देखो बेटा ऊपर से नाम बदल दिया, नीचे से कुछ किया नहीं, है ना, नाम ही बदल गया ना, या बदलाव कुछ किया इन्होंने। तो आगे आ गया चैप्टर 6 बेटा, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, प्रोक्लामेशन, वो सभी आ गया बेटा। तो आगे चैप्टर है 7, प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। ये वही है, मेरा टाइटल वही है ना, आगे भी आप वही देखेंगे इसमें। तो ये बड़ा रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स जो है ना, एक कंट्री दूसरे से, वो 105A वगैरह से ना, उनका नया चैप्टर बना दिया। तो जो चैप्टर 8 था ना, वो था सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स। अब जो ये बड़ा है, ये जो चैप्टर 7A है ना, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट वगैरह, इसको इन्होंने चैप्टर 8 बना दिया। जो 7A था ना, 7A तो बन गया है 7A, 8 बन गया चैप्टर। तो जो प्रेजेंट सिक्योरिटी प्रोसीडिंग है उसको चैप्टर 9 बना दिया। बड़ा बदला था कुछ नहीं, वही देखो। आइए चैप्टर 9 बना दिया। तो चैप्टर 10 जो है, जो चैप्टर 9 है मेंटेनेंस ऑफ वाइव्स, वो हो गया। तो चैप्टर 11 है मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रांक्विलिटी। थोड़ा इसके 4 पार्ट है ना। पार्ट ए में है अनलॉफुल असेंबली, ठीक है। पार्ट बी में है पब्लिक न्यूसेंस, ये वही है। पार्ट सी में अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस एंड एप्रीहेंड डेंजर, 144 का है ना, वही है ना बेटा, यही वही है। आगे है डी, डिस्प्यूट्स एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, वही है। तो आगे जो चैप्टर 11 था,
वो बन गया चैप्टर 12, प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। तो अब जो 12 पढ़ते हैं हम, इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस एंड दे हैव पावर टू इन्वेस्टिगेट, वही है बेटा, इसमें भी वही है ना। देखो चलो बेटा, अब तो आपको पता चल गया ना बेटा, घबराने की कोई लोड़ नहीं कि न्यू कोड पता नहीं क्या आ गया जी। ये नाम उतला भाग दिया है, वो सनहिता बना दिया कोड को। बेटा पता क्या है, पंडित नेहरू जो है ना बेटा, ये तो गाड़ियां निकालते हैं लोग उनको, ये वाले विजनरी, ऐसा नहीं था, ये वाले विजनरी, ये रोट बड़ा, बहुत पढ़ा लिखा था बेटा। तो वो कहता था कि आवर न्यू जनरेशन इज सेंटेंस टू हार्ड वर्क। सेंटेंस जैसे सजा होती है ना, इनको मेहनत करनी पड़ेगी, पूरी स्ट्रिक्ट इंडिया। ये कहते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ही वाज द मैन हु अडॉप्टेड द मिक्स बेस्ट थिंग ऑफ सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दोनों चीज़ें अच्छी थी। तो बड़ा पब्लिक सेक्टर के बड़ा रूट किला बलाई वगैरह कारखाने ना उसने लगाए थे पब्लिक सेक्टर। इफ यू आर गोइंग टू गिव एवरीथिंग टू प्राइवेट, बड़ा आप आवर पीपल आर स्टक अप इन इराक, कुवैत या कहीं होंगे ना, फंस जाते हैं। एयर इंडिया लेके आती थी ना, गवर्नमेंट खर्चा देती थी, प्राइवेट वाले तो कहेंगे पैसे दो दिलाओ। इफ इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट, बड़ा एक प्रोफेसर है हैरल्ड लास्की, सुना होगा ना, हैरल्ड लास्की, पोलिटिकल साइंस का, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। He has written a book, Welfare State. What are the basic features? India is a welfare state. What are the basic features of a welfare state? The general का क्वेश्चन आता है ना, that the basic facilities which are necessary for proper development, proper survival of a human being are to be provided by the state irrespective of the means of the person. जैसे बेटा एजुकेशन, स्टैंडर्ड एजुकेशन, हाउसिंग, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, food, etc. These are to be provided by the state. What happens now? आपने पढ़ा ना, there is one university प्राइवेट है, उत्तराखंड में तो 90 लाख लगती है फीस मेडिकल की। एक देश है यूनिवर्सिटी प्राइवेट बठिंडा में, हरियाणा में तो फीस बहुत, मौलाना जो है, इधर बेटा मौलाना है अम्बाला में। तो जैसे इफ यू हैव गवर्नमेंट सीट्स इन प्राइवेट कॉलेज, तो गवर्नमेंट सीट की उन्होंने फीस आधी कर दी। इफ दे चार्ज 64 लाख, 32 लाख कर दी। आदेश वेंट टू हाई कोर्ट, ही मैनिपुलेटेड कि इनको भी उतनी देनी पड़ेगी। बेटा पुअर मैन, ऑर्डिनरी पर्सन, whose son or daughter, despite all handicaps, disability, he has been able to crack or to clear the examination, but his poverty has come in the way. कर्जा नहीं देते बेटा, इतना देंगे कर्जा भी। He has written that book, Welfare State। बड़ा हम वेलफेयर तक आ गया, ये तो गरीब आदमी, मैं दो आदमियों का नाम लेता किसी के अगेंस्ट नहीं। केजरीवाल कहता है कि हम तो आम आदमी पार्टी है, उसने 1,145 करोड़ अपने जो मरम्मत है, रिपेयर पर ना, उस पर लगा दिया। बड़ा 1 करोड़ भी की मरम्मत हो जाती है, रिपेयर। बाकी जो 144 करोड़ है वो बेटा 10 लाख एक को दे दो, 1400 घर बन जाते कि नहीं? 1400 घर बना के दे दो गरीबों को, 10 लाख का एक घर, ठीक है ना? तो वो बल्ले बल्ले होती है ना। आप मोदी के पास आ जाओ, वो कहते हैं आम आदमी गरीब आदमी के पास बढ़ गया। उसका जो एक ट्रंप का जहाज था 8000 करोड़ का, वही जहाज इसके पास है।
कपड़े कितने बदलते हैं, वो भी बदलते हैं। बोला मैं बोलता नहीं, पर ये गरीब कहाँ से है? गरीब तो वो है कि दे वांट टू कीप, जैसे अंग्रेज कहते थे ना बेटा, वही है कि अब धर्म के नाम पर मुल्ला मदरसों में जाओ, ये इधर जाओ, वो बाबा बबलेश्वर है एक, वो उनके सारे बेटा कहता परमात्मा हिंदू राष्ट्र बनाना है, कोई कहता खालिस्तान बनाना है, कोई कहता इस्लामिस्तान बनाना है, कोई कुछ कहता है। बेटा दीज आर द डेज ऑफ कंपटीशन, यू हैव टू स्टडी। आपके पास तो टाइम ही नहीं है इनके लिए। तो दे वांट टू डिस्ट्रैक्ट कि जे आप पढ़ लिख जाएंगे ना, इफ यू स्टडी, आप पढ़ेंगे तो यू विल क्वेश्चन देम, कि वो आपको धर्म के नाम पर, धर्म में खतरा है, वो बड़ा उधर ले जाएगी आपको। जब आप बड़ा त्रिशूल निकालेंगे, कृपाने निकालेंगे, छुरे निकालेंगे, इधर जाएंगे तो पढ़ेंगे कैसे? पढ़ाई के लिए तो बेटा आपको मन चाहिए ना, कूल माइंड, कंपैशनेट, टाइम लगता है टू कम टू दैट पोजीशन, वो कहाँ जाएगा? तो बेटा सब इजीएस्ट वे है टू डिस्ट्रैक्ट और डिट्रैक्ट द पब्लिक अटेंशन फ्रॉम द रियल इश्यूज। अब देखो बेटा पेट्रोल की क्या कीमत है, टमाटर की क्या कीमत है, देखो सब्जी की। अब बड़ा इशू मैंने और ले लिया, और ये भी ज़रूरी है। देखो जो टमाटर बेटा आंध्र प्रदेश से 20 रुपए आएगा ना, वो यहाँ से 100 रुपए से कम नहीं बिक सकता एट एनी कास्ट। भाई बड़ा नेशनल हाईवे आपने बनाए हुए ना, इससे 25,000 रुपया था टोल टैक्स लगता है ट्रक का, तो आंध्र प्रदेश टू डिस्प्ले 35-40,000 रुपया लगता है पेट्रोल का। दूसरे जब दूसरे आदमी होते हैं और मेंटेनेंस गाड़ी के खर्चा, तो कैसे होएगा? है ना, इधर यू शुड हैव, रेलवे है, कोई बड़ा कम्युनिकेशन जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, उसको इजी बनाओ। जो असेंशियल कमोडिटी लेंगे उन पर टोल टैक्स नहीं लगेगा, उनको डीजल जो है 50 रुपये मिलेगा। गवर्नमेंट की किटी में पता है, ये स्टेट और सेंट्रल, ये पेट्रोल जो है ना बेटा, ये 50 रुपये है, 50 रुपये के ऊपर स्टेट और सेंट्रल का टैक्स लगता है। देख लो जाके बेटा, इनकी आमदन आती है आराम से, पैसा आता है जब उड़ाते हैं। तो पीपल ना नॉट अवेयर, बेटा जो करेगा उसको अंदर कर देंगे देशद्रोह में। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं करता, सभी गवर्नमेंट ऐसे ही करते हैं। तो वन बेटा हमारे चीफ मिनिस्टर पंजाब के जो आम आदमी हैं, तो सबसे बेटा पहले थे बेटा 41 गाड़ी सीएम की, अब 45 हो गई है सिक्योरिटी में। जो उनकी बीवी है, उनकी माँ है, सबको वीआईपी ट्रीटमेंट। पूछो कहाँ से जाते हैं? कोई भी हो बेटा, ये भी नहीं, सभी आते हैं। देयरफॉर मेरी बेटा आपको एक एडवाइस है कि डोंट लिसन टू दिस, दिस इज ऑल नॉनसेंस। जो करते हैं ना, पॉलिटिक्स बहुत पोल्यूट हो चुकी है, विशेष हो चुकी है। जो पार्लियामेंट में आप देखते ही हैं क्या होता है, वो कहते हैं बेटा अब क्या है विद इन इंडिया की एंड जो नाग है ना, मैथिज बेटा, उनकी जो वाइफ है ना, औरतें हैं, वो मोर्चा बनाई खोड़ी, देखे ना आपने टीवी में, मोर्चा लगाया हुआ उन्होंने, बोरिया रखा के, बैग लगा के, राइफलें उठाई हुई है कि वो प्रोटेक्ट ऊपर करते हैं, उसके करते हैं। तो बेटा कैन यू सी सच ए सिस्टम? इधर भी मेरे ऐसे ही है। पंजाब में रोज नारे लगते हैं, हरियाणा में भी लगते हैं, वो कहते हैं हमने बहुत किया, फ्लड आया, नीदर है ना पंजाब did any help to the people. It is the self-help of the people who are doing all this. तो ऐसे है बेटा, आप you are coming for judicial review, and judiciary till now is still the best server because you are immune from the public pressure. ये बेटा मैट्रिक पास जो होता है ना एमएलए, वो मिनिस्टर बन जाता है, उसको दवाई का पता नहीं होता, तो जो एमबीबीएस डॉक्टर डांट मारता है ना, तो यहाँ वो काम नहीं होता जुडिशरी। एटलीस्ट सेशन जज इज ए वेल रेड पर्सन, इफ ही आस्क यू समथिंग देयर मस्ट बी सम मीनिंग। ये बेटा जजेज भी क्या करते हैं कि ओवर नाइट दे वांट टू बी रिच, है ना, कई बता होते हैं, पावर हो जाती है,
तो हरियाणा का पता आपको एक अंदर है, हरियाणा का एक जज है जिसने ऐसा बड़ा अंदर है वो, ठीक है ना। तो बड़ा ये करना भी है किसी ने, रीजनेबल लिमिट्स है। इफ यू बड़ा फॉर्चूनर ले ले, इतना मकान ले ले, तो अब जो लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का डिसीजन है ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, वो रेफर्ड उसका ये है कि इवन इफ होता क्या, बड़ा कंप्लेंट करता है ना, तो कंप्लेंट करता मेरे से रिश्वत मांगी, ये किया, फट दिया उसको, तो वो क्या करते हैं, कहते हैं उसको कि देखो मैं तेरे को इतने पैसे देता हूँ, तो मुकर जाओ, रिजाइन कर जाओ। तो वो क्या विड्रा कर देता कंप्लेंट। वो कहते इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट complainant has died, complaint does not support the version. If there is other evidence, then person can be prosecuted. ये मैटर था कि in the absence of the complainant or when he does not support the case, can a person be prosecuted without that evidence? They say yes if there is a other material. कोई बेटा ये डाल कोई आ जाता है वैसे सोशल वर्कर, वो लेके आ जाता है एविडेंस, मेरे पास ये है ये, नाउ बेटा हम आते हैं अपने टॉपिक पर। ये तो देख लिया बेटा, इसका डर कोई नहीं है। जो नई सीआर आ रही है ना, सीआरपीसी, ये वही है। इसके 484 सेक्शन है, उसके 485 सेक्शन है, रेस्ट ऑलमोस्ट सेम है। जो इन्होंने जैसे बेटा प्ली बार्गेनिंग में चैप्टर ना 21A 265A12 वो उन्होंने नया चैप्टर बना लिया। जैसे 105A2 आ गया है, वो नया चैप्टर बना लिया, ऐसे किया है। रेस्ट ऑफ दैट इज ऑलमोस्ट द सेम, ठीक है। तो लास्ट टाइम हम कहाँ तक पढ़े थे, 27 पढ़ जाना, 26 वाला दे लिया था। मैं रिपीट करता हूँ। Powers of the court to try offences. High Court can try any offence under the IPC 26 सेक्शन डालोगे ना, ये देखो subject to the other provisions of this court. Any offence under the IPC may be tried by High Court, Court of Session. The High Court or Court of Session can try any offence under the IPC so far as other courts are concerned. 3. Any other court by which such offence is shown in the first schedule to be triable. Other court than the Court of Session would be able to try the offence if that offence is shown in the first schedule. When you open the first schedule, ये नई कोड है ना, इसकी 2 शेड्यूल है, इसकी 2 शेड्यूल है। तो फर्स्ट शेड्यूल देखो, पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर द आईपीसी, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर द आईपीसी, यही है ना।
पहला है सेक्शन, दूसरा है ऑफेंस, तीसरा है पनिशमेंट, फोर्थ है कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, फिफ्थ है बेलेबल नॉन बेलेबल, तो सिक्स्थ है बाई व्हाट कोर्ट ट्रैवल. All offences are given herein. Now, with an IPC, you have studied. पढ़ा ना IPC में section 34 and 149. Very important. The basic difference between section 34 and 149 is that section 34 does not create any specific offense, whereas section 149 creates a specific offense. Now, documentary evidence is the best evidence, from where you will come to know that section 34 does not create the offense and 149 creates the offense. But this rule देखो आप भी. The schedule starts from section 109. It means all the sections which are before 109, they do not create any offense. They are only explanatory. और आप देखो आगे जाके ना 149 मिल जाएगा आपको. देखो इसमें शेड्यूल में बेटा मिल जाएगा आपको. भैया आपने बड़ा पता चल गया ना कि दिस इज द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. ठीक है, इट क्रिएट्स ए स्पेसिफिक ऑफेंस. शेड्यूल है. अब बेटा इसके आगे प्रोवाइडो. प्रोवाइडेड दैट एनी ऑफेंस, ये है रेप का केस 376 रेप, 376 ए बी सी. बेटा ये एग्रावेटेड फॉर्म, एक तो सेक्सुअल सिलेक्शन है, दूसरा है एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ रेप. Now these offences should be tried as far as possible by a women judge. तो आगे है बी. Any offence other under any other law shall, when any code is mentioned in this behalf in such law, be tried by such court, and when no court is mentioned, may be tried by one the High Court or any other court by which such offence is shown in the first schedule to be tribal. Now there is a offence under the Money Laundering Act, but Money Laundering Act provides that the offences under the Money Laundering Act would be tried by a special court. Then they say special court, judge of special court would be a person who is a session judge or additional session judge. Then High Court notifies that this additional session judge or session judge would be a special court for the purpose of trial of offences under the Money Laundering. Similarly, Scheduled Castes and Scheduled Tribes Act, Prevention of Corruption Act, to Unlawful Activities Act. So these are to be tried by special. But if no court is mentioned, can be tried by the High Court or by any other court in which it is shown to be tried in the first schedule. थोड़ा फर्स्ट शेड्यूल का जो लास्ट चैप्टर है ना वो निकालो आफ्टर सेक्शन 511.
Classification of Year 2. Classification of offences against other laws. If offences punishable with death, imprisonment or more than 7 years, cognizable, non-bailable court of session. If punishable with imprisonment for 3 years and upward, but not more than 7 years, cognizable, non-bailable magistrate. बड़ा दूसरा any magistrate, यही है ना? So then, if nothing is mentioned there, then this will apply. Then, if it is punishable with 7 years or more, in that case, it will be a court of session. Session court will try. So, section 27, बड़ा तो ये है ना कि ट्रायल ऑफ जुवेनाइल, अब तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बन गया. बड़ा कौन सा एक्ट पढ़ा आपने? जुवेनाइल जस्टिस, उसका नाम क्या है? Juvenile Justice Act, Care and Protection of Children, Act Law Act 2015. 2015 बेटा पता क्या है? पहले था एक्ट 1986, तो मेनका गांधी बन गई, उसने वो बना दिया 2001 जो एक्ट है 2000 का, तो वो एक्ट मेजनरी है, तो ये एक्ट भी मेजनरी है. आप पढ़ेंगे ना, वो लागू तो होता नहीं. देखो कोई भी है बेटा, बेगर्स आपको दिखते हैं ना, यू फाइंड चिल्ड्रन बेगिंग एट द क्रॉसिंग. चंडीगढ़ में भी होंगे, और दिस इज प्रोहिबिटेड. इफ चाइल्ड इज बेगिंग, he is in need of care and protection. He should be taken from the parents, put in the children home. बड़ा होता कोई. तो अब बेटा आ गया सेक्शन 28. Sentences which High Court and Session Judge may pass. High Court may pass any sentence authorized by law. So what is the meaning? Sentence authorized by law means sentence which is permitted by law. Now, any person who commits murder shall be punished with death or imprisonment for life. You cannot award any other sentence than imprisonment or life or death. अब फिर और क्वेश्चन आ गया, वो कहते हैं कि he has committed such a heinous, such a horrible, such a horrendous. अब बेटा मणिपुर में क्या हुआ कि मणिपुर में 2 women, they were handed over by the police to the miscreants. They were raped. They say this is such a case which requires their sentence, and it should not be in the jail. It should be in the open, public hanging. Let the public see that. Let the public see that the person is sentenced to death. बड़ा स्टोन से या पब्लिक हैंग करो, बड़ा होएगा कोई? बड़ा इसमें है केस नोट करो, वो है हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन. लिख लो, लिखना था आप. हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन. हाई कोर्ट or court of session can pass
only that sentence and pass only that sentence which is permitted by law. Law. Stop. The law provides for the law provides for execution. The law provides for execution of death sentence, execution of death by hanging, execution of death sentence by hanging in the jail. The jail. But execution of sentence, but execution of sentence, execution of आगे ले लो death sentence, but execution of death sentence by hanging, by public hanging, execution of death sentence by public. जहाँ आम लोग है ना वो कहते हैं वहाँ इसको दो, public hanging is not authorized by law, is not authorized by law. बड़ा केस लिखो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस लक्ष्मा LACHMA लक्ष्मा देवी AIR 1986 SC सुप्रीम कोर्ट 467 थोड़ा वो कहते हैं कि इसको ना पब्लिक में हैंग करो, वहाँ इतना घिनौना अपराध किया है. So this is not permitted because the introductory lecture जो मैं आपको बतलाया भी था कि फॉर्म नंबर 40 when a person is sentenced to death, ये हमारा क्या प्रॉब्लम है? शोर करता है बेटा शोर. अच्छा चलो हवा. When a person is sentenced to death, death sentence will not apply at that time. He has the right to appeal because next question is that High Court can pass any sentence, but Court of Session can also pass any sentence authorized by law, subject to one condition. There is only one condition, that if the Court of Session passes the sentence of death, it does not become final unless it is confirmed by the High Court. High Court would say, till then he will be kept in the jail. So that is form number 40. सेकंड शेड्यूल का ना आप देखोगे तो उसमें कहता है कि सेशन जज will issue a warrant to the jail superintendent, to the central jail superintendent, central jail बिलायल चंडीगढ़ है, पटियाला, अम्बाला, शिमला. Whereas this person in case number so and so on this day before me was awarded sentence of death. Now you are to keep him safely till you receive the further order. अब वो तो बड़ा जेल में है ना, अब उसको जो नेक्स्ट आएगा ना वारंट बड़ा वैन उसकी मर्सी पिटिशन में खत्म हो जाती है. सभी उसके जो चैनल है ही हैज एग्जॉस्टेड ऑल द लीगल रेमेडी, सारे कानूनी जो रास्ते हैं ना वो खत्म हो गए इसके बाद. अब उसको फांसी लगानी है तो वो होगा 42. देखो 42 Whereas कि जो को आदमी आपको भेजा गया था इस केस में ट्रायल में, नाउ यू आर टू
गया ना इसका। In the court of, in the to the officer in charge of jail. This is to authorize, beta second para, and require you to carry the said sentence into execution by causing the said name of Ska to be hanged by neck until he be dead at means central jail, at central jail Patiala, central jail Chandigarh, central jail Ambala, central jail Shimla, at बेटा टाइम होता उसका, टाइम होगा ना, टाइम at and date at 6 a.m. on 13th of August. बेटा tomorrow, ठीक है ना, टाइम तो होगा ना, तो अब यहाँ बेटा पब्लिक में तो लिखा नहीं है, तो therefore the Supreme Court, बेटा अटॉर्नी जनरल है ना, who is the officer of Government of India, who is the law officer of Government of India. बेटा जनरल आदि का क्वेश्चन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये सोलिसिटर जनरल एडिशनल, ये नहीं है लाभ उनके गवर्नमेंट के, ये द ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हु विच लॉ ऑफिसर कैन एड्रेस द पार्लियामेंट, अटॉर्नी जनरल। बेटा पढ़ा कहीं कि नहीं पढ़ा। व्हेन देयर वुड बी इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट होती है ना प्रेसिडेंट की, जज की पार्लियामेंट में, तो हु प्रेजेंट्स द केस, हु एड्रेसेस द पार्लियामेंट, अटॉर्नी जनरल है ना। जब आप एक क्वेश्चन पढ़ते हो ना, उसके साथ दूसरे भी ऑटोमेटिकली जनरल नॉलेज कोई और रिलेटेड है वो भी आप सोच लो। तो इसमें था कि यू कैन नॉट एक्सिक्यूट ए पर्सन इन द पब्लिक। तो the power of the session judge and addition session judge are same. ये ओके ना, ये सेशन जज और एडिशन सेशन जज दोनों लिखे हुए हैं ना, यार पावर आई इक्वल। अब इससे क्वेश्चन निकलता है कि एन एडिशन सेशन जज, बेटा ये भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रिलिमिनरी में, एन एडिशन सेशन जज इज सबऑर्डिनेट टू सेशन जज, हाई कोर्ट, both high court and session judge or any of them, high court, बेटा सेशन जज और एडिशन सेशन जज, सेंटेंसिंग पावर तो सेम है ना बेटा, 5 और 5 पर्सन सुपीरियर जुडिशियल सर्विस के अम्बाला में पोस्टिंग है। द सीनियर मोस्ट इज डेजिग्नेटेड एज सेशन जज, जो सीनियर होता है ना उसको सेशन जज बना देते हैं। Assistant session judge can pass a sentence of imprisonment not exceeding 10 years. The sentences which the magistrate may pass, the court of chief judicial magistrate may pass any sentence authorized by law except the sentence of death or imprisonment for life, imprisonment exceeding 7 years. बड़ा सीधा लिख दो, court of chief judicial magistrate can pass a sentence of imprisonment not exceeding 7 years, mean 7 years. तो judicial magistrate first class 3 years,
फाइन ऑफ 10,000 लिखा है ना, देखो बड़ा पढ़ो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, फाइन 5,000, सेंटेंस 1 ईयर। बोला आप तो सेकंड क्लास पॉइंट ही नहीं करते, ठीक है, अब नहीं करते, फर्स्ट क्लास ही होते हैं। तो देन चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सेम थिंग, ठीक है। The court of chief magistrate shall have the powers of the court of chief judicial magistrate, and that of a metropolitan magistrate, the powers of the court of the magistrate of the first class. ये क्वेश्चन आया 2-3 बार, हरियाणा में, उत्तराखंड में, हिमाचल में। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट may pass a sentence of imprisonment exceeding 7 years. A chief judicial magistrate may A pass a sentence of imprisonment exceeding 7 years. B sentence of imprisonment not exceeding 7 years. C sentence of life imprisonment. D all the above. Not exceeding 7 years. यहाँ ये होगा ना, वेर एक्ट किया ना, क्वेश्चन तो वेर एक्ट से है, तो आगे है The Court of Judicial Magistrate of second class is empowered to pass a sentence of imprisonment not exceeding 7 years, 3 years, 2 years, 1 year. बड़ा सिंपल है ना, इसमें बड़ा क्या है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रिलिमिनरी में। तो इनमें क्वेश्चन जो है ना, मेन में तो नहीं आते, इतना सिंपल है, और बड़ा प्रिलिमिनरी में आ जाते हैं। तो वेयर एक्ट इज नेसेसरी। तो अब है सेक्शन 30, बड़ा सेंटेंस इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। Sentence of imprisonment in default of payment of fine. The court of a magistrate may award such term of imprisonment in default of payment of fine as is prescribed by law. बोला जब आप पढ़ते हो ना IPC, shall be punished with imprisonment and fine or fine. If fine is a part of punishment, then in case of imprisonment, terms are fixed. But in case of fine, it is not fixed. Then how if one does not pay the fine? आप नहीं पे करोगे तो इतना आपको जेल टर्म भुगतनी पड़ेगी. You will have to undergo imprisonment for this period. The court of a magistrate may award such term of imprisonment in default of payment of fine as is authorized by law, provided that the term is not in excess of the powers of the magistrate under section 29. वो नहीं है कहता कि मैं 5 साल की सजा दे देता हूँ आपको, फाइन नहीं पे करोगे तो. Shall not, where imprisonment has been awarded as a part of the substantive sentence, exceed 1/4, बेटा इसको मार्क करो, exceed 1/4 of the term of imprisonment
which the magistrate is competent to inflict as punishment for the offence, otherwise than as imprisonment in default of payment of fine. अब देखो बेटा, A has committed a theft in the house of B. The maximum punishment for that is 7 years. है ना, या सिंपल थेफ्ट कर दी, उसकी 3 years है. तो जो डिफॉल्ट है ना, वो 1/4 मीन 9 months. 1/4 9 months, इससे ऊपर नहीं है. थोड़ा इसमें आप कुछ नहीं याद रखना, आपने यही रखना है कि 1/4. अब देखो जो क्वेश्चन आया हुआ है ना, वो है बेटा, ये हरियाणा का 2021 में 221 में जो हरियाणा का एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन आया था. अंडर CrPC, imprisonment in default of payment of fine can be awarded under CrPC. Imprisonment in default of payment of fine can be awarded A, to run concurrently with the substantive sentence imposed. B, in addition to the substantive sentence imposed. C, court can condone it. D, none of. बेटा लिखा ना वर्ड इन एडिशन टू. अब बेटा मैं सेक्शन पढ़ता हूँ, ये भी मार्क कर दो. The court of a magistrate may award such term of imprisonment default of payment of fine, provided that it is not excess of the powers of a magistrate under Section 29, shall not where imprisonment has been awarded as a part of the substantive sentence. Part of substantive sentence exceed 1/4 of the term of imprisonment when which the magistrate is competent. आगे बेटा लिखो, बेटा सब सेक्शन 2 पढ़ोगे ना, ठीक हो जाएगा. The imprisonment awarded under this section may be in addition to a substantive sentence of imprisonment for the maximum term awardable by the magistrate under section 29. बेटा ये इसमें आ गया ना ये. अब मैं बेटा दोबारा पढ़ता हूँ. The court of under CrPC, imprisonment default of payment of fine can be awarded to run concurrently with substantive sentence imposed in addition to the substantive sentence imposed. तो लिखा हुआ ना, लिखा ना कि in addition to. आगे बेटा ये है दिल्ली का. ये in case the offence is punishable with both imprisonment and fine, the maximum sentence that can be awarded by the court in default of payment of fine is 1, equal to the term of imprisonment, which is maximum fixed for the offence. 2, half of the term of imprisonment, which is maximum fixed for the offence. 1/3 of the term of imprisonment, which is maximum fixed for the offence. 1/4 of the term of imprisonment, which is maximum fixed for the offence. तो बेटा 1/4 है ना, तो डायरेक्ट में आंसर है. तो बेटा ये दिल्ली का फिर है, दिल्ली का 2019 का है. In case the offence is punishable with both imprisonment and fine, the maximum sentence that can be imposed by the court in default of payment of fine is 1, 1/5 of the term of imprisonment, which is maximum fixed for the offence. 1/4 of the term of imprisonment, which is maximum fixed for the offence. 1
one third of the term of imprisonment, which is which the offence to which the offender has been sentenced, one fifth of the term of imprisonment to which the offender has been sentenced. तो वन फोर्थ है ना, बेटा वो ही रिपीट कर दिया, लैंग्वेज चेंज करती थोड़ी सी होती, तो वन फोर्थ एंड इन एडिशन टू। तो अब बेटा इसके साथ ही क्वेश्चन आ पाएगा, जब आप सेक्शन 428 निकालेंगे ना CrPC का, देखो अब बेटा क्या है कि व्हाट वी हैव स्टडीड, बेटा हमने पढ़ा क्या है, पढ़ा है कि स्पीडी ट्रायल इज द राइट ऑफ द अक्यूज। तो एक्चुअली व्हाट हैपन, पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दी हुई है कि हाई कोर्ट में इतने साल के केस पेंडिंग है, दूसरे में पेंडिंग है, तो अब सेक्शन हमारे पास आ गया 436 ए, जिसमें जमानत हो जाती है आधी की है। और तो क्या है कि a person who is under trial has not been granted bail, he is in the jail for 10 years and he was awarded 10 years of imprisonment. But he will be next day, he will be out of the jail. Take a period of imprisonment undergone by a person during investigation, query or trial shall be deemed to be imprisonment for that purpose. तो 10 साल से उसको बड़ा पनिशमेंट हुई, 10 साल उसने भुगत लिए। बट इफ देयर इज डिफॉल्ट ऑफ फाइन, एक्सेप्ट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन होगा, लिखा बेटा 428 में लिखा होगा, ये अमेंडमेंट हुई है, नीचे देख लेना। अब है कि पर्सन was sentenced to imprisonment for 10 years and a fine of rupees 10,000. He was awarded default sentence for 1 year. Actually, he was in jail for 12 years. He was in jail for 12 साल जेल में था, 10 साल की उसको पनिशमेंट हुई, तो 10,000 रुपया जुर्माना हो गया उसको। इफ ही डज नॉट पे द फाइन ही विल रिमेन इन जेल। तो वो कहता है जी मैं तो जेल में रह गया हूँ 1 साल, तो मेरा वो काटा जाएगा कि नहीं? नो, बेटा ये याद रखना आपने। आप समझ आया क्वेश्चन? नहीं बेटा, जब एक क्वेश्चन याद करते हो ना, साथ में दूसरा भी कर लो। नो, इट इज नॉट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। तो बेटा ये पनिशमेंट नहीं है, फाइन जो है ना इन डिफॉल्ट ये एक पेनल्टी है। तो बेटा आप लिमिटेशन पढ़ते हो ना, लिमिटेशन में द लॉ बार द रेमेडी नॉट द राइट, बड़ा टिपिकल क्वेश्चन आता है। सॉरी, तो मैं क्लास च बाद च गल करी। लिमिटेशन बार द रेमेडी नॉट द राइट, तो यहाँ नहीं आएगा ये, ठीक है। अब बेटा ये तो पता चल गया ना। अब आ गया कलेक्टिव। बेटा होता क्या है कि मैजिस्ट्रेट कैन अवार्ड मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ 3 years, यही पढ़ा ना। बट he is trying a case, one is for assault, other is for theft, third is for hurt। तो केस तो 3, एक आदमी ने ड्यूरिंग वन केस कोर्स 3 अपराध कर दिए ऑफेंस, तो ट्राई तो करेगा ना। अब क्वेश्चन ये है कि उसकी सेंटेंसिंग पावर तो 3 years, क्या वो वेदर ही कैन इम्पोज मोर देन 3 years सेंटेंस और नॉट इन दीज केसेस, कि टोटल जो पीरियड है वो 3 years से ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता। दिस इज सेक्शन 31। तो दूसरा और आएगा कि एक में उसने अवार्ड कर दी 3 साल, दूसरे ने कर दी 2 साल,
एक में कर दिए 1 साल। तो क्या ये सेंटेंसिंग कंकरेंट होती बेटा एट द सेम टाइम? कंसेक्टिव होती है वन आफ्टर द अदर। कंसेक्टिव इज वन आफ्टर द अदर, कंकरेंट इज साइमल्टेनियसली। क्या साइमल्टेनियसली रन करेगी कि कंसेक्टिवली करेगी? अब देखो, when a person is convicted of one at one trial of 2 or more offences, the court may, subject to provision of section 1 of the IPC, sentence him for such offence to the several punishments prescribed therefore, for which the court is competent to inflict such punishments when consisting of imprisonment to commence the one after the expiration of the other, in such order as the court may direct. या देखो, run one after the other as the court may direct। कैसे है कि पहले थेफ्ट की चलेगी, फिर असॉल्ट की चलेगी, फिर इंजरी की चलेगी। ठीक है, मेरे बड़ा बाबा राम रहीम है ना, इसको कहते हैं कि पहले तो ये भुगतेगा 20 साल की, बाद में दूसरी चलेगी। क्योंकि लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो मिली है ना, इट मीन टिल द एंड ऑफ द लाइफ, उसमें नहीं कोई कंसेशन से। आगे आगे बढ़ा पढ़ो। In such order as the court may direct, unless the court directs that such punishment shall run concurrently। बड़ा क्या है कि if the court does not pass the order कि ये concurrently नहीं चलेंगे, तो then they will run consecutively। तो वहाँ और केस आ गया कि he has been awarded 3 years for theft, 1 year for assault, 2 years for injury। जेकर वो ऑर्डर में नहीं रहता कि कौन 3 साल की पहले चलेगी, उसके बाद 1 ईयर चलेगा, उसके बाद 2 चलेगा, तो फिर क्या होगा? जी कलेक्टिव नहीं होगा। इसमें आप ना थोड़ा सा दिमाग लगाओ। व्हाट इज द जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ? बेनिफिट ऑफ डाउट shall go to the accused. When court has not mentioned the order in which the sentences are to run, then it will run concurrently. Otherwise, consecutively। अब आगे है, in case of consecutive sentences, it shall be not be necessary for the court, by any reason, only of the aggregate punishment for the several offences, being in excess of the punishment which it is competent to inflict on a conviction of a single offence, to send the offender for trial before the higher court। बट अब ये नहीं है कि मैं तो इतनी पनिशमेंट दे नहीं सकता तो मैं इसको ऊपर भेजूँ। प्रोवाइडेड दैट इट शैल नॉट that provided that in no case shall such person be sentenced for a term longer than 40 years। बड़ा इसीलिए ना ये जो सेक्शन है ना 31 है, ये मजिस्ट्रेट को ही अप्लाई होता है, सेशन कोर्ट नहीं होता। क्योंकि चीफ जुडिशरी की पावर कितनी है? 7 years, उसकी 2 गुना कितनी होगी? अब नेक्स्ट पढ़ो। द एग्रीगेट पनिशमेंट shall not exceed twice the amount of punishment which the court is competent to inflict for a single offence। For a single offence, the CGM is entitled to award 7 years, then 40 years। थोड़ा सेशन जज के ऊपर तो कोई है नहीं है, नो। तो
ये आप लिख लो सेक्शन 31 हेडिंग है कंसेक्टिव और कंकरेंट रनिंग ऑफ sentences. Section 31 gives full discretion. Section 31 gives full discretion to the court to order sentences for two or more offences at one trial to run consecutively or concurrently, having regard to the nature of offences and attendant attendant होता है बेटा जो circumstances होती हैं attendant aggravating or mitigating circumstances stop. There is no reason to hold that the normal rule is that HOLD hold. There is no reason to hold that the normal rule is to order the sentences run consecutively and exception is to order the sentence to run concurrently full stop. The discretion under section 31 has to be exercised along judicial lines stop. Of course, if court does not order the sentences to be concurrent, then sentences shall run consecutively. Stop. In case of consecutive sentences, section 31(1), beta 1 subsection means 1. 31(1) indicates that courts have to direct the order
that court have to direct the order in which the court ने order देना in which the consecutive sentences are to run, in which the consecutive sentences are to run. Consecutive sentences are to run. That is, in case of order of consecutive sentences, the court has to specify that in case of consecutive sentences, the court has to specify the order in which the sentences are to run, full stop. If the court's direction running of sentences concurrently, if the court's direction running of sentences concurrently, ये बड़ा concurrently order होगा ना, comma, if the court's direction is running of sentences concurrently, comma, the order of running of sentences is not required to be mentioned. Is not required to be mentioned. बेटा जेकर उन्होंने कंकरेंट कह दिया ना, फिर तो सेम चलेंगे, उसमें ये नहीं कि पहली कौन चलेगी दूसरी कौन चलेगी, होने देगा. आगे लिखो. When accused is convicted of two or more offences, when accused is convicted of two or more offences committed during the course of same transaction, comma, the rule of thumb, thumb, which award award is that the sentences are to run concurrently, full stop. In such situation, imposing consecutive sentences is not justified. बड़ा केस लिखो, O कैपिटल M कैपिटल. ये जो केस है ना, ये है आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द प्रीवियस जजमेंट. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्रिस्टलाइज जो लॉ को क्लियर किया, क्या पोजीशन है, ये सेक्शन 30. OM चेरियन CHEREN चेरियन OM चेरियन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला AER 2015 SC 2015 SC 303
बढ़ा के लिखो। When court awards many sentences, when court awards many sentences at one trial, comma, it is required to specify the order. It is required to specify the order in which sentences are to run. In which sentences are to run. To stop. In the absence of such specific order, in the absence of such specific order, comma, it is logical, it is logic, logical to conclude, it is logical to conclude that the sentences are to, that it is logical to conclude that sentences are to run concurrently and not collectively, concurrently and not collectively. Concurrent बेटा collectively मैं लिख लिया ना, या वो ऑर्डर तो देगा, या वो ऑर्डर में लिखा ही नहीं है। तो इसमें केस लिखो सुनील कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, क्या लिखो, लिख लिया, में लिखो 2021 5 SEC 560। बड़ा दूसरा लिखो मलकीत सिंह गिल वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, मलकीत सिंह गिल और स्टेट ऑफ झारखंड, ब्रैकेट में लिखो 2022 ब्रैकेट क्लोज 8 SEC 204 8 SEC 204। आप तो केस हो गया ना कि जेकर नहीं लिखा हुआ प्रोजेक्टिवली है तभी बेटा ये रन करेंगे कंकरेंटली बिकॉज बेनिफिट ऑफ द शैल गो टू द अक्यूज। बेटा ये तो समझ आ गया ना आपके इतना है। ये सेक्शन जो है ना बेटा इट अप्लाइज टू द मजिस्ट्रेट एंड नॉट द कोर्ट ऑफ सेशन। बेटा ये केस है Mutha, MUTHA, that this section applies to बेटा सब सेक्शन 2 है ना, ये 40 ईयर से ऊपर नहीं वार कर सकते, हाफ से ट्वाइस ही कर सकते। सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 31 will have no application। क्या लिखो, जो है ना 40 ईयर्स की या मोर देन ट्वाइस हो, ये अप्लाई नहीं करता। have no application to a case tried by court of section, tried by a court of section। nor would it step in, nor would it step in। बेटा ये इडियोमैटिक लैंग्वेज है कि इनको आएगा टू फॉरबिड डायरेक्शन फॉर consecutive
running of sentences by the court of session का केस लिखो। ये है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का केस। मुथा MUTHU मुथु रामा रामा लिंगम मुथु रामा लिंगम वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु AR 2016 SC 3340। ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की बेटा डिफरेंट डिसीजन थी। इवन सुप्रीम कोर्ट वाज नॉट अवेयर ऑफ सेक्शन 427। आपने देखा ना कन्वेक्टिव और ठीक है ना। तो 427 कहता है कि ये मेरा एक तो केस अब हो गया, अब वो पैरोल पर चला गया। जब वो पैरोल पर चला गया तो उसने और क्राइम कर दिया, उसको फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया। तो वो होता है कि दूसरे केस में जो सेंटेंस है ना नहीं होती कंकरेंट, कोर्ट नहीं वार्ड कर सकती। पर जेकर दूसरी लाइफ होगी तो देन दैट लाइफ वुड रन कंकरेंटली, क्योंकि लाइफ मीन फॉर द होल ऑफ लाइफ। ये तो आपने पढ़ा ना, लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द होल लाइफ, देयर कैन नॉट बी टू लाइफ। तो वो एक्सेप्शन थी। इसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन इधर जाते थे, कुछ उधर जाते थे। तो देन इस केस में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कंक्लूड किया कि दीज सेंटेंसेस आर टू रन कंकरेंटली इफ subsequently a person is awarded life imprisonment who was already undergoing life imprisonment। हो गया ना। सेस करने से पहले ना ये 31 का ना इसको ये बड़ा PCS का क्वेश्चन है, फिर ये DGS का है। If an accused at one trial is convicted and punished with imprisonment in 2 offences under section 31 of CrPC, imprisonment in the absence of specific direction of court will run A. consecutively, B. concurrently, C. consecutively as per direction of the jail authority, D. consecutively as per the direction of the jail authority, concurrently। मैं आपको दिखाया चैरियन का केस नहीं, इन द एब्सेंस ऑफ इट विल रन कंसेक्टिवली दिखाया नहीं है। ये आर्डर में स्पेसिफाई नहीं किया तो रन ये कंकरेंट रन करेगी तो करेगा, ये नहीं करेगा तो फिर कंसेक्टिव रन होगी ना। फिर आंसर तो है ना। बेटा केस भी लिखा दिया आपको सुप्रीम कोर्ट का। तो आगे है दिल्ली का है 2022 का बड़ा लेटेस्ट क्वेश्चन। When after hearing the evidence for the prosecution and the accused in a trial on the charge for 5 offences, each punishable with imprisonment that makes 10 to 3 years, the additional chief metropolitan magistrate is of the opinion that accused is guilty, he may 1. pass a judgment of conviction, then sentence him to a term on each count, directing it to run consecutively, but such that the aggregate punishment does not exceed 14 years of imprisonment. 2. pronounce the judgment of conviction and then submits the case to the court of session if he is of the opinion that the case merits more punishment than he is empowered to inflict। 3 है both 1 and 2 are correct। तो 4th है both 1 and 2 are incorrect। मैं दोबारा पढ़ूं।
थोड़ा ध्यान सुन लो। When after hearing evidence for the prosecution and accused, बड़ा ट्रायल सुन लिया तो 5 ऑफेंसेस के लिए उसको उसने कन्विक्ट कर दिया, गिल्टी हो गया। अब है कि किया एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन। बेटा मैंने आपको बताया ना पहले, एडिशनल की पावर वही होती है जो चीफ की होती है 7 ईयर्स की। पास इस जजमेंट ऑफ कन्विक्शन एंड sentence him to term on each count, directing him to run consecutively, but such that the aggregate punishment does not exceed 40 years of punishment. ये 40 years है ना, 40 years है कि नहीं? कंसेक्यूटिव भी कह सकता है और 40 years से ऊपर नहीं जाएगा। दूसरा, pronounce the judgment of conviction and then submit the case to the court of session if he is of the opinion that the case merits more punishment than he is empowered to give. तो बेटा ये तो कहीं लिखा नहीं हुआ, लिखा है इसमें, पहला तो लिखा हुआ है ना। तो ओके 1 और 2 करेक्ट, ये भी बात ठीक नहीं। 1 और 2 इनकरेक्ट, ये भी नहीं ठीक, क्योंकि पहला करेक्ट है। अब तो समझ गया क्वेश्चन नहीं, ठीक है ना। तो बेटा ये है 31। तो ये दूसरे सेक्शन जो है ना वो नहीं है, इसके बाद है जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है ना, वो है ये सेक्शन 39। थोड़ा सा इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। थोड़ी रिसर्च कर लें, थोड़ा ये हम करेंगे। उसके बाद ये 39 पर क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ना, जो आजकल भी है चैप्टर बनाया इन्होंने नई CrPC में, वो है पावर ऑफ अरेस्ट। इस पर बेटा आपको ना इन ईच एग्जामिनेशन, ये पंजाब का हो, हरियाणा का हो, दिल्ली का हो, हिमाचल का, यू विल फाइंड 1 और 2 क्वेश्चन। तो केस लॉ पर बेस है इस पर, तो इसको बड़ा हम करेंगे डिटेल में, क्योंकि जो DK बासु का केस है ना, जो जोगिंदर कुमार का केस है, रमेश कुमार का, इस पर मेन में क्वेश्चन आए हुए गाइडलाइन। तो मेन के क्वेश्चन भी मेरे पास हैं, वो भी मैं आपको बतला दूंगा क्या। इसको डिटेल में करेंगे 2-3 बार, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आते हैं। यू हैव द डिस्कशन बट डजंट मीन कि मेरे पास तो पावर है मैं फड़ लूँगा। जैसे पुलिस वाले कहते हैं चल अंदर, या पैसे दे या चल अंदर, यही होता ना बेटा, या चलान कटूंगा या पैसे दो, मेरे पास तो पावर है, यही करते हैं ना। हाँ भी की गल आका बेटा, गल्लां नहीं करनी यार। बेटा पुलिस वाले फड़ देंगे कि नहीं, कहते भी जा पैसे दे, नहीं तो चलान कटदा, यही होंदा ना, पावर है। वो कहता गल गिरफ्तार करूँ या पैसे दे छूट जा। तो द पावर नाउ is not, though it is discretionary, it has to be exercised judicially। और दूसरा होता है कस्टडी के अरेस्ट में क्या फर्क है। एक बार क्वेश्चन आया, एवरी अरेस्ट इन्वॉल्व कस्टडी बट एवरी कस्टडी डज नॉट इन्वॉल्व अरेस्ट। मतलब बतला सकते हो कोई क्वेश्चन, एग्जाम्पल देखो। चलो सोच के आना, आओगे। तो देखो बेटा, पुलिस वाले ने रोक लिया सस्पिशन से, तो कहते बैठ जा इधर, बैठ गया मैं। आई एम इन द कस्टडी ऑफ पुलिस, तो मेरी फॉर्मल अरेस्ट तो नहीं पाई उन्होंने। फिर कोई देर बाद कहते जा चला जा। तो जेकर अरेस्ट पाई होगी ना, फिर ऐसे नहीं छोड़ेंगे, वो जमानत तो लेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना।